Welcome back to our program Legal Matters, and we're here now discussing some of the immigration issues. But if you feel that you have other questions to ask, then don't hesitate, just call us. Shai Saab, we were talking earlier on about discussion ये कर रहे थे immigration के matters के बारे में, with family visas and family issues, and particularly about people who wish to call family members over. That's right. So अब इसके बारे में थोड़ा बताएं. Obviously there's new rules come in about the I mean, generally, the visa application process was quite simple. You want to sponsor your blood relative, and you would say that, I mean, obviously, when you're applying, the UKBA looks at their circumstances. I'm assuming if somebody is trying to call somebody from Pakistan, say, they'd have to show that they've got strong roots in Pakistan, and they're not going to be at risk if they were allowed to come to UK. So obviously that's one side of it, but also the person who normally sponsors, they look at their financial circumstances. Have they got a steady job, they can support this person they want to call over, and also if they've got sufficient accommodation. So this was the general criteria. You would lodge an application supporting their application, and on the basis of the weight of the evidence they provided, they would either be allowed or refused. If they were refused, then they would be allowed a right to appeal, but unfortunately that right of appeal has now been taken off. The family members are no longer allowed to appeal against a refusal on visitor visa. The logic behind is that the government feels that a lot of the taxpayers' money was wasted on these spurious appeals. So now the rules are that if you initially apply for a visitor visa and it is refused, the UKBA immigration officer will give you a letter of refusal in which he or she will highlight the points on which your application has been turned down. And as long as you can address those grounds for refusal, then you would be in a position to reapply, and as long as you have rectified those areas of concern, then you would be allowed visa. Rafiq Saab, obviously these are major issues. Appeal का भी process शायद आप बता रहे it's come to stop now. तो इसमें practicality की issues जो होंगी affecting the people. Well, practicality ये है कि हर family में आप जानते हैं कि कोई ना कोई आते जाता रहता था. ये अपने हमारी basically UK में रह रहे हैं, लेकिन कोई अंकल को बुला रहा था, कोई अम्मी को बुला रहा था, कोई अम्मी को अब्बे को बुला रहा था. ये तो दिस इज़ गोना हैव अ मेजर इम्पैक्ट जो है ये जो है कि अपील्स राइट जो ले लिए हैं. शायद ने बोला है कि उनकी थिंकिंग ये थी कि ये स्प्यूरियस अपील्स थी, बट मेरा व्यू ये है कि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था. आई थिंक मे हैव अबाउट 80 to 90% जो केसेस हम डील कर रहे थे बाय अपील, वो कामयाब होते थे क्योंकि प्रेपरेशन सही होती थी. जो केस हमारे ख्याल में कमज़ोर था तो हम स्ट्रेट वे उनको बोलते थे बेसिकली इसको फॉरगेट कर दो और री एप्लीकेशन दो. राइट. आई थिंक मेरा ख्याल में ये जो एक मनी मेकिंग एक्सरसाइज है गवर्नमेंट के ऑफिस में. बेसिकली वो बोलते हैं कि हमारा वीज़ा ऑफिसर उधर बैठा हुआ है, ठीक है, उधर अबू धाबी में. राइट. फॉर एग्जांपल अबू धाबी, पाकिस्तान के लिए अबू धाबी में बैठे हुए हैं. राइट. वो फैसला करेगा. सो बेसिकली ही इज़ जज एंड जूरी. राइट. उसके सामने एप्लीकेशन जाती है और उसने कंसिडर करना है कि इसको वीज़ा दूं कि नहीं. मेन टेस्ट ये होता है क्या चांसेस हैं कि वो वापस चले जाएंगे अपने मुल्क में. लेकिन वो जो इतने बेवकूफ़ लोग हैं उधर जो बैठे हुए थे, काफ़ी केसेस ऐसे हुए थे कि माँ बाप, वो पहले भी आई थी काफ़ी दफ़ा, 3-4 दफ़ा उन्होंने इधर चक्कर लगा के चले गए, लेकिन वीज़ा ऑफिसर उधर बैठा हुआ था. वो उसने बोला कि मैं वीज़ा नहीं दूंगा, मेरा नहीं ख्याल ये वापस जाएंगे. भाई काफ़ी दफ़ा जज के सामने हम केस के लग जाए और जज ये नहीं समझता, उसने सोचा क्यों इसको रिफ्यूज़ किया, लेकिन वीज़ा ऑफिसर जो उधर बैठा हुआ है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं. तो इसका मकसद क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है अपील राइट जज के सामने नहीं अभी जाना. जज जो होता है, एटलीस्ट जज के सामने केस जाता था, वो जज समझता था ये इसने ना बेवकूफ़ा ने सही किया है कि गलत किया है, और वो अगर वो सेटिस्फाई होता था तो वीज़ा वो ऑर्डर करता था वीज़ा दिया जाए. अभी क्या है सिस्टम, वो बोलते हैं कि हमने रिफ्यूज़ कर दिया है, अगर आपका ख्याल है कि हमने गलत किया है तो री अप्लाई करो और हमें फिर कन्विंस करो
कि हमें वीज़ा दिया जाए। Obviously इसमें fees involved. फीस इन्वॉल्व होगी और उसके सामने ही वो जाएगा भाई। एक दफ़ा उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, कितने परसेंट चांसेस है कि वो अपना वो फैसला बदल देगा भाई? I think not very many. It's a very low percentage. तो ये इसमें हमारे लोग को एक्शन लेना चाहिए। I think they should be speaking to their MPs और जो काउंसलर्स हैं, प्रोटेस्ट करें इसके खिलाफ कि बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। Refusal right of appeal. हाँ, इसके बारे में बिल्कुल करना चाहिए। Because this is a democratic right. क्योंकि बात ये ना, ये वीज़ा उनको मिलेगा नहीं, कैसे जिएंगे? ये तो और कोई तरीका नहीं, उनको वापस जाना पड़ेगा मिलने के लिए। रफीक साहब, होम ऑफिस ने ये कह रहा अगर आप अपील कर दें तो उन्होंने ये कह रहा it blocks सिस्टम अप, उसमें टाइम जाता है। दिस विल स्पीड एफिशिएंसी। अब इसके बारे में क्या? ना, इसके मैं नहीं मानता। अब अगर आप अपील कोर्ट में है तो ये 30 साल से काम कर रहा हूँ, इतना क्वाइट अपील कोर्ट अभी हैं, तो आप जाएंगे देखेंगे ना भाई, अभी तो इतने ज़्यादा अपील नहीं है। तो ये रीजनिंग उसने दी है कि हमारा जो अपील प्रोसेस क्लॉग अप किया है, ये बिल्कुल बकवास है। दूसरी ये बात है कि उसी शुरुआत से जब मैं ये केसेस कर रहा हूँ 30 साल से, उसी टाइम के पैसा नहीं से, अपील का पैसा नहीं लेते, अभी तो वो पैसा भी लेते हैं। यू हैव टू लॉज फीस, तो वो पैसा भी बना रहे थे। तो अभी बोलते हैं ये हमारा ये, मैं मिलता रहता हूँ होम ऑफिस यूके बोर्ड रीजन्स के प्रेजेंटिंग ऑफिस से मिलता रहता हूँ, मैं पूछता हूँ बिजी हो कि नहीं बिजी, वो बोलते हैं हम बिजी नहीं है। तो कैसे ये कह सकते हैं ये अपील सिस्टम बिजी है? It's clogging the system up. शायद साहब वो ये इसी बारे में वो बात ये कह रहे थे होम ऑफिस वालों ने, जो उन्होंने मेंशन कराई, तो अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन डाल दें तो वो प्रोसेस जल्दी होएगा, as opposed to trying to appeal, because appeal takes longer. Date आने में time consuming होता है, and it's that rhetoric उनका। Rafiq साहब का the position very clear है, this is he doesn't believe it and he thinks it's ludicrous, to say the least. I mean, I agree with Mr. Rafiq that it on the face value it looks like a money making exercise for the government, for the UKBA, because the previous system was working fine. At least the people had half a chance of having their appeal heard and maybe having the decision reversed, but now that right has been taken away from them. So like he said, that when you are applying to the same person who has initially refused you, what chance do you stand? He might turn around and say no again. That's you know, who is there to supervise his decision? You know, he is the judge and the jury himself or herself. ये मैं अपने व्यूज़ उनसे ये कहता नाज़रीन, आपको पता चला रफ़ीक साहब से, शाहिद साहब से, and our views are clear that this is your right, और ये right of appeal होना चाहिए, should not be refused or taken away. तो आप ज़रूर इस पे लॉबी करें MP से, and you can talk to your local councillors as well, and it should be brought to the attention at the Parliament, because this is totally unfair and unjust. Shahid, we also want to talk about some of the other issues about जहाँ पे issues about the naturalisation of the British citizen, उसके बारे में, and we're talking about the test, Life in UK test. Yeah, Life in UK test, since October 2012, it has been a requisite requirement that anybody who's applying for naturalisation or British passport, they should be able to speak English at a good standard. So that's why the rules have been brought in, and the government's got a Life in UK test which everybody needs to pass prior to them actually lodging the application for naturalisation or UK passport. So Rafiq Sahab, obviously आप भी advice दें, which I'm aware of in the office, for people in the issues related to this. बिल्कुल, लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो तो करना ज़रूरी है, और ज़ाहिर है कि यू नीड ट्रेनिंग फॉर इट, यू नीड टू गो टू राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट, और आप समझते हैं, मेरा ख्याल ये भी है कि इट्स नॉट एन ईजी टेस्ट टू पास, यू नो, क्योंकि ये लोकल आदमी से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें वो भी नहीं समझ जानते होंगे भाई। It's about 35 questions. That's right. And in October this year, they're making the rules even more stringent and more strict. So in actual fact, it's not helping. It's just making it difficult and harder and harder. More and more difficult. Is it specifically targeted countries like Pakistan, Bangladesh, Ghana, Nigeria? Non-English speaking. चलिए अभी आते हैं, आपके पास कॉल आ रही है, उससे शामिल करते हैं। हेलो, कौन कहाँ से? हेलो, I think call drop हो गई. आज communicate telephone lines have been a bit of a problem today. वो
भी रोज़े की तरह टायर्ड हो गए हैं ना। रोज़े चल रहे हैं ना, तो टेलीफोन लाइन भी थकी थकी है। अच्छा शाहिद, we obviously want to talk about a parent making a claim on the basis of child. Yeah, उसके बारे में थोड़ा सा obviously we want to discuss that. I mean, if there are two parties and they are here in UK, but neither of them have a British passport or leave to remain here in UK, but they have a child between them, then as long as the child been here for 7 years, then that child will actually get certain rights because the child would be able to say that he or she has got strong roots, strong connections here in UK. And obviously there's been cases in the past where it has been held up that any child who has been here for 7 years then has a right not to be removed and granted leave to remain here. Once that child has got leave to remain, then obviously the parents are in a position, as long as they've got contact order to see the child and they are actually involved in looking after the child on a regular basis, then to apply on the grounds that it would be not in the best interest of the child for the parents to be removed from UK. Okay, ठीक है। और रफीक साहब, आप इसमें कुछ शामिल करना चाहते हैं? ये बस 7 साल का ये रूल है बेसिकली। इट्स अ लॉन्ग रूल जो है अनफॉर्चुनेटली। मैं सोच रहा था कि हमारे पास अभी ये केस चल रहा है, इंडिया का एप्लीकेंट है और बेचारे ने शादी इधर इस मुल्क में की है, बच्चा भी है 5 साल का है। अभी उन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसी उनको पकड़ लिया है और उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। वो काम कर रहा था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा था। और हम सोच रहे हैं कि कैसे ये इतना लंबा करें कि 7 साल के रूल में आ जाए वो। डिपेंड्स है कि स्ट्रेच करना पड़ेगा ना किसी तरीके से। मगर आपको obviously we uphold the law, obviously नहीं वो सही तरीके से होगा। ये तो मैं चाह रहा हूँ सही तरीके within the legal framework you're going to be given that, of course. ठीक है। Obviously English language is still a requirement on them cases as well. Yes. So again, the family needs to be able to justify that and show evidence. There's not going to be a recourse on public funding. इसके बारे में आपने नहीं mention करा था रफीक साहब? recourse to public funds. Yeah, exactly. जाहिर है कि गवर्नमेंट से तो नहीं लेना चाहिए ना भाई, ये तो very clear है। हाँ, तो रहायश भी नहीं, right? तो ये अगर काम कर रहे हैं जहाँ सपोर्ट कर देंगे ये सबसे बेहतर है। Okay. What about जो issue today? Obviously 7-year rule comes in for a child and in that case for the family life in UK. Your 10-year rule, Joe, that's now taken over of the 14-year rule. People mistaken sometimes. They think the 14-year rule still they have yeah. Obviously, we've discussed it in the previous programs. That the summary-wise, because I've been time but short summary-wise, it's no longer applicable. It's been abolished. Now it's been replaced with a 20-year rule. And even then, you don't have an automatic right of indefinite leave to remain. You would only be given a 30-month visa or 2.5 years. And then at the end of the 2.5, you have to renew it again until you get to a stage where you've been here for 30 years. You know, so that visa needs to be renewed, right? Once you've have been here for 10 years, at the end of 10 years, then you would be allowed to apply for indefinite leave to remain. Rafiq sir, very quickly on that one. Obviously, आपने cases लिए बहुत सख्ती, यहाँ 14 साल के रूल के थे, बहुत cases किए हैं. Even at 14 years, it was quite a long period of time था ना, बहुत लंबा अरसा था. और ये जो अपना सबूत पेश करने 20 साल अभी कर दिया है और अभी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और सख्त कर दिया है, अच्छा नहीं है। सही बात। बस obviously आपका obviously time run out हो रहा है because of the program goes so fast rapidly. तो यही कहना पड़ेगा to our viewers, thank you for participating and being an interactive program with us in this discussion about the legal issues. और अपना मैं शुक्रिया करता हूँ रफीक साहब का, who's part of our team, shares a platform with us, and शाहिद साहब का, who regularly part of the team, और आपका भी who actually bothered to come on the air and have their issues discussed. आपसे बस ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके पास कोई issues हैं
अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, लाइक प्रीवियसली हमने आपको मेंशन करा, आप हम ऑफ एयर भी ले सकते हैं, some of your confidentiality will be kept in that sense. And I'd like to thank everybody, and hopefully आपका रोज़े ठीक जा रहे हैं, because at the moment हमें पता चला है टेलीफोन लाइंस को भी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे कम्युनिकेशन वाइज, but hopefully by next week it should be a lot better. तो अगेन शुक्रिया फॉर वाचिंग लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे, हमें इजाज़त दें आइंदे नेक्स्ट वीक के, और खुदा हाफिज़.